as a civilized country, Pakistan and India should definitely stick to the treaties which they have with the intervention of the International World Bank and the other things. They have come to conclude that both countries should get benefit out of it. India has though built so many dams, Pakistan has protested on those dams, but still I think the flow of water should go. And the upper riparians, like the Punjab, sometimes Sindh claims that the Punjab is doing injustice. We have also been claiming that India is not doing injustice. We have Punjab as a big brother and India as a big country. Of the International World Bank and the other things, they have come to conclude that both countries should get benefit out of it. India has though built so many dams, Pakistan has protested on those dams, but still I think the flow of water should go. And the upper riparians, like the Punjab, sometimes Sindh claims that the Punjab is doing injustice. We have also been claiming that India is not doing injustice. We have Punjab as a big brother and India as a big country. Of the International World Bank and the other things, they have come to conclude that both countries should get benefit. It will be a real threat to the world order, world peace. I think this is not only the issue of Indus Waters Treaty, it will be a debate between Canada, America, it will be a fight between all the European countries, it will be a fight between states. Of the International World Bank and the other things, they have come to conclude that both countries should get benefit out of it. India has though built so many dams, Pakistan has protested on those dams, but still I think into India, so he got delayed over there. And then the monsoons came, and when he was brought to the Indus, and he stood at its side, and they told him this is the river. He said, no, this is Indus. Indus means sea in Greek language. So he named it Indus because he said it is a sea. It's a big river. Its expanse used to be in the plain about 14 miles. So that was not now there are dams and therefore you can control that. But previously when there were no dams in Teras Pakistan area, ships used to ply between what is now Bakar and what is Gerihan, or this 14 miles of coverage. Now we have bridges, but then they so it is named for being a sea rather than a river. And the other question that I want to raise for everyone's information is that people blame Field Marshal Ayub Khan for signing this treaty and for signing of 3 rivers to India. People forget what was happening. Immediately after independence, India stopped the water of the canals that were taking from Madhupur handles, Hossainiwala handles, and our leadership thought for a long time, till 1960 this was negotiated, and they realized that we cannot go to war with India every day. So India has the ability to divert the waters of these 3 rivers, and as a sovereign country, if it does, what will we do? Will we go to war? So it was decided to secure the northern 3 rivers and to let India have a control
control over the southern three rivers. That was how it was possible. The World Bank also helped negotiating. But India does not have the capacity so far to divert the water of Jhelum, Chenab and Indus. It has only the capacity to store the water, run the river dams, which does not avoid diversion. So for the time being, there is no fear of diversion. However, India can have control and supply us water when we don't need it and stop it when we need it. But that is also so far limited. If we build more dams, then it will be more. I thought this was. And secondly, it has been the declared policy of Pakistan that if this treaty is fiddled with, that would be war with India. India has been trying to, move around this treaty, saying we need to renegotiate it, blah, blah, blah. But our position has been that no, what has been decided is good enough, and if you try to alter this, this would mean starving Pakistan of water for which Pakistan is likely to go to war. So that is where the things stand. Therefore, once India, and knowing the potential of this conflict, when World Bank was getting it negotiated, it cannot be revoked or arbitrarily broken up, this treaty, by one country. Both have to agree to review, because it has a potential for a very big conflict between India and Pakistan. So let me, the last statement that has been made by Javed Hassan, and I will then divert my question to Mr. Ahmed Barasuti on this question that how are these, what is the principle of international treaty, particularly in the context of the Indus Waters Treaty, and how do you see it or explain it from the perspective of that India holding it against unilaterally? Could it be solved through legal battles, or do we have some other option system? And how far Pakistan's voice would be heard internationally? First of all, I would like to appreciate that you holding this event, and speakers are vision and presidents have some people around the table to discuss. You see, international law, you always interpret a treaty as per its provisions. And in any international treaty, parties agree on the law that will govern, and that law is written in the text of the treaty. That is how it is done. You can't walk out of the text of the treaty and say we are going to do X and Y action. So normally international treaties do have provisions for suspension, for termination, for withdrawal. We have, for example, certain treaties like non-proliferation treaty or TNP, from where you will give a 6 months notice and withdraw. There are water arrangements elsewhere in Africa, in Europe, where you could partially serve a notice and withdraw. However, in this treaty, at the time of negotiation, because of conscious decision of the parties, that they will not have any withdrawal clause permitting unilateral action by either state. And perhaps the reason Side, they told him this is the river. He said, no, this is Indus. Indus means sea in Greek language. So he named it Indus because he said it is a sea. It's a big river. Its expanse used to be in the plains about 14 miles. So that was not, even now, and there are dams and therefore you can control that. But previously when there were no dams in Teras Maritime area, ships used to ply between what is now Bakar and what is Gaihan, or this 14 miles of coverage. Now we have bridges, but then they. So it is named for being a sea rather than a river. And the other question that I want to raise for everyone's information is that people blame Field Marshal Ayub Khan for
signing this treaty and for signing of 3 rivers to India, people forget what was happening. Immediately after independence, India stopped the water of the canals that were taking from Bhagpur handles, Hussainiwala handles, and our leadership thought for a long time, till 1960 this was negotiated, and they realized that we cannot go to war with India every day. So India has the ability to divert the waters of these 3 rivers, and as a sovereign country, if it does, what will we do? Will we go to war? So it was decided to secure the northern 3 rivers and to let India have a control over the southern 3 rivers. That was how it was possible. The World Bank also helped negotiating. But India does not have the capacity so far to divert the water of Jhelum, Chenab and Indus. It has only the capacity to store the water, run the river dams, which does not avoid diversion. So for the time being, there is no fear of diversion. However, India can have control and supply us water when we don't need it and stop it when we need it. But that is also so far limited. If we build more dams, then it will be more. I thought this was. And secondly, it has been the declared policy of Pakistan that if this treaty is fiddled with, that would be war with India. India has been trying to, move around this. Outside उसमें एक मैंने ये बात कही कि पार्टीज क्या टीम होनी चाहिए कि दो। एक मैं और अर्ज करना चाहूँगा कि जिस ट्रीटी के फ्रेमवर्क से बाहर है, वो है नंबर ऑफ डैम्स जो इंडिया बनाएगा, रेजर्वायर्स इंडिया बनाएगा। लेकिन ट्रीटी का जो लीगल साफ है ना, वो इंजीनियरिंग ट्रीटी है, जो लोग अमूमन भूल जाते हैं। It is not a license to Indian government to make as many number of dams as it wishes and makes. There is a view in Pakistan that the treaty permits construction of as many dams to India as it wishes, which is incorrect. It's a treaty which is engineering in nature. Its requirement क्या है कि when India decides to make a pondage or a dam, उसकी वो site select कर लेगा, उसका budget approve कर देगा, Section 4 Land Acquisition Act का इंडिया का notification issue करके land acquire कर लेगा, EPC contract award कर देगा, environmental study conduct कर लेगा, engineers hire कर लेगा, consultant hire कर लेगा, फिर drawings बन जाएंगी। Drawings जब बन जाएंगी तो construction से 6 महीने पहले वो drawings पाकिस्तान को इंडस वाटर कमिश्नर कहेगा, ये मैं बना रहा हूँ। अब पाकिस्तान को इंडस वाटर कमिश्नर ये इशू रेज ही नहीं कर सकता कि आप बना क्यों रहे हो, आपको ये जरूरत क्यों है। वो कहते नहीं, हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो फ्रेमवर्क है वो इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क है। एज पर एनएचसी एक्ट पहले मेरे स्पिल वे की हाइट ठीक है, सेल्टिंग में कर सकता हूँ, साना में इतना बैरक, तो आपके पास जो ऑब्जेक्शन की गुंजाइश रह जाती है वो सिर्फ महदूद हद तक इंजीनियरिंग ऑब्जेक्शन की रह जाती है। यहाँ और कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। अब ये इंडस वाटर कमिश्नर जो रहे हैं, जो भी इंडस वाटर कमिश्नर है, वो एसेंशियली क्रिएचर ऑफ ट्रीटी है, वो ट्रीटी से तो बाहर नहीं आ सकता। हम आज तक यही समझते आए हैं कि पाकिस्तान पानी की जो स्ट्रेटेजिक मसले को इंडस वाटर कमिश्नर क्यों नहीं रेज करता, आई सबमिट लीगली वो कर नहीं सकता। दिस इज समथिंग आउटसाइड द ट्रीटी। और पाकिस्तान को अगर एतराज है इंडिया के साथ कि आप कॉन्डेजेस बेतहाशा बनाना चाहते हैं, तो उस एतराज को बायलैटरली आपने टेबल करना है। ट्रीटी के फ्रेमवर्क में मेरी दानिश में ये फ्रस्ट्रेशन की वजह है इस ट्रीटी के हवाले से, उसको अगर हम क्लियर कर लें तो ट्रीटी का स्कोप उठ देगा और हमारे इतराज़ात बायलैटरली एक लोग हैं हम उसे पेश कर सकते हैं। होल्डिंग इन अबेयंस की ज़ाहिर कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, इतना हम सब आप जान चुके हैं। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान ने ये भी ऐलान किया हुआ कि होस्टाइल एक्ट के तौर पर सर्व किया जाएगा। जो इस पर पाकिस्तान से जो एक्सपर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाबस्ता हैं, जब वॉर गेमिंग करते हैं, ग्लोबल इंटेंस डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे मुकामात हैं जहाँ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की करीब इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता, लेकिन डिटर करने के लिए कि उनके पास है तो आपके पास है। तो उसमें से जो आज से 10-15 साल से जो एक चीज आइडेंटिफाइड है वो है जब इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली एप्रोवेट करे।
Unfortunately, کسی نے سوچا بھی نہیں. I have been interacting with Indian lawyers, with Indian experts in international law. We all do that. And they keep telling us, no, in this world we do these for all these fellows. So there is no way. جب میں کہہ رہا تھا کہ RSS والے کہہ رہے ہیں, they were in extremist position and there is no way we can even think of it. 2019 میں جب مودی صاحب 2016 میں پاور میں آئے, پہلا ان کا فریم ورک تھا ایپلیکیشن کا نعرہ لگا تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے, تو ان کو بھی لیگل ٹیم نے بھی سمجھایا. Commission that legally, how can I get out of this? They told him in the articles where there is no possibility. You have to sign a separate agreement with Pakistan and then both of you can then go off the water in the treaty. So then he made task force constitute, let that task force function and work on this issue. Task force on the ground. Task force نے 6-7 سال بعد کہا کہ 3-4 سال بعد دوسرے میں پھر آپ کو نوٹس ہو گیا ری اوپننگ. 2023 میں 2 نوٹس پاکستان ہوا ہے, 2024 میں پھر 2 نوٹس پاکستان ہوا ہے. میں اسے ری اوپن کرنا چاہتا ہوں. اب ری اوپننگ میں بھی پاکستان کی جانب سے یہی خطرہ آ گیا ہے. جو آپ نے بات کی نا تو ایسا کہ جو لائبریرین ہوتا ہے اس کو ایک ٹینشن ہوتی ہے اور ٹینشن بڑی جائز ہوتی ہے اور اس کو ہمیں سیفٹی کانٹیکٹ میں بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں بطور ملک بھی سمجھنا چاہیے. لیگل ٹینشن ہوتی ہے, اس کو انٹرنیشنل لاء میں کہتے ہیں, جس کا نام ہے لوور رائپیرین اینگزائٹی. لوور رائپیرین ویسے ہی انسیکیور ہوتا ہے تو وہ پریشان کر رہا ہے کہ آپ اسے کہیں ٹریٹی ختم ہونی چاہے, آپ اس وقت وقت نہ بنا کے اس پانی کو کل روک سکیں یا برسوں روک سکیں یا 1 سال سے 2 سال بعد روک سکیں. اس کی مثال مجھ سے کسی باہر والے نے پوچھا, میں نے اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے جس میں میرے ایک زمانے میں گئے ہوں اور میں ساتھ والے کو کہہ دوں آپ سے میں آپ کا ٹائٹل نہیں مانتا, ان گھر میرا ہوگا, اس کو پریشان جائے گا کہ میں کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا, میں تمہارا ٹائٹل ڈینائی کر رہا ہوں اور جب میرا دل کرے گا میں تمہارے گھر پہ کروں. That is where we stand. That is the anxiousness of a low riparian. Please understand. تو ہمارے ایکشن اور ریئیکشن اور ریوارڈمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ براڈ لیگل فریم ورک ہے جس میں اس کو دیکھنا چاہیے. تو ہمارے if I take a cue from what you have said is about reopening the treaty, and then the lower riparian have their own stress and anxiety which they will not be able to respond to. But I think Pakistan has been passing through this anxiety for a long time. So my question to the Shahid Saab and the Raymond Saab would be that how would one respond to this anxiety? Because this sword is going to continue to hang on your head because it's a lower riparian. We also have seen floods in Pakistan, intermittent flood I call it, because they come after like say 10 years, 8 years, this has been a pattern, and now since we have better means of forecasting, we have good data and we can see that when the floods are going to be there. And is there any, and that's a question, it's an engineering question, is there a possibility looking at that what should Pakistan do in order to save itself from the havoc of floods and be able to secure the border for bad times? I don't know, I may be making a very not very technical argument, but I think the engineers would be in a better position to answer. Since I'll come back to you, it was not... I just wanted to say that I think yesterday World Bank President met Mr. Modi. Now I want to know what is the context of that. Is it at the request of World Bank President or is it at the request of Mr. Modi that he has come to India? What is happening? What is the World Bank position? بٹن دبا لیں, بٹن دبائیے. شراز صاحب اردو میں بول لیں کوئی. آپ اردو میں بولیں بے شک. ایک بہت سارے مسکنسپشنس ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ اینٹی کے بارے میں. جنرل پبلک
ہم جب سینیٹرس کو بھی بریفنگ دیتے ہیں اور ہمارے پاس سبزی والا بھی اسے پوچھتا ہے تو لوگ بہت سب کچھ جاننا چاہتے ہیں اور بہت لوگوں کو بہت ساری نالج نہیں ہے ٹریٹی کے بارے میں. میں بہت سے شارٹلی اس وقت جیسے جین صاحب نے کافی اسکین کر دیا ہے میں شارٹلی اس کو بیک گراؤنڈ آف 1948 میں جو انہوں نے ہماری کلاس میں پانی بند کر دیا تھا جو ایڈوائزر کے پاس رہ گئے تھے اور وہ پھر وہ کنٹینیو ہوتا رہا نیگوشیٹ ہوتا رہا پھر الٹیمیٹلی 1960 میں ٹریٹی سائن ہوئی ورلڈ بینک اس وقت اس کو انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کہتے تھے IPRD اور پھر یہ دس از ناٹ اے ڈویژن آف واٹر دس از اے ڈویژن آف ریورس. تین دریا انڈیا کے تین دریا جو مغربی دریا ہیں انڈس جھیلم اور چناب اس میں 80% پانی بہتا ہے سسٹم کا وہ پاکستان کو ملے اور تین دریا جو ہیں راوی سندر بیاس وہ انڈیا میں لیے کیونکہ وہ انڈیا میں گیمس میں کہتے تھے ان کو اس کی ضرورت تھی انہوں نے وہ لیے اس میں 20% پانی بہتا ہے جو ایوریج 33 mm کی 33 mm پانی انڈیا کو اور 137 mm جو مغربی دریا وہ پاکستان کو اس میں کوئی وہ کوانٹیفیکیشن نہیں ہے وہ سارا پانی ہمیں ملے گا جو مغربی دریاؤں کا ہے اور وہ سارا پانی جو مشرقی دریاؤں کا وہ انڈیا کو ملے گا. ابھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور میں راوی کیوں سو کیا جی راوی دنیا نے پانی بند کر دیا ہے یہ کوئی ہمیں خوش قسمت ہے انڈیا راوی ریور جو ہے وہ انڈیا پر لوکیٹ ہوا ہے اس کا سارا پانی ان کے استعمال کے لیے سوائے 45,000 ایکڑ زمین کا سیراب کر سکتے ہیں شکر اور ناروال ڈسٹرکٹ میں. لیکن ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ وہ سارا پانی استعمال نہیں کر سکتے یہ ٹیکنیکلی اور کچھ اور ریزنس کی وجہ سے تو تقریباً 1 سے 1.5 سے کا اور کچھ سالوں میں 2 mm پانی بھی راوی میں آتا ہے اور کنٹینیوس رہتا ہے. یہ ہم لاہور کے لیے لاہور سٹی لاہور میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کیونکہ ہمارا جو انڈر گراؤنڈ سارا ڈپینڈ کرتے ہیں انڈر گراؤنڈ واٹر پہ اور ہمارا وہ ریچارج ہوتا ہے ریور سے اور اگر اس راوی کے واقعی ہو جائے تو پھر ہمارا جو پانی جو ہے وہ جو 800 فٹ پہ آ گیا ہے اور 1,000 چلا گیا تو شاید ہم اس کو ایکسپیکٹ نہ کر سکیں اور ہمارے ٹیوبویل ڈرائی ہو جائیں جو اب تک بہت سارے ہو چکے ہیں. تو یہ ہمارے پانی یہاں پہ مل رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ جیسے سلطان نے کہا اس میں انٹرنیشنل ہے پروویژن ٹریٹی میں نہیں ہے لیکن ایک انٹرنیشنل جو واٹر لاز ہے اس میں کہ ایٹ لیسٹ 5% پانی جو ہے ہمارے دریا میں بہنا چاہیے اس کے انوائرمنٹل اور ایگریکلچر سسٹم کے لیے. لیکن راوی میں ایسا ٹریٹی میں نہیں ہے ٹریٹی میں نہیں ہے اور ہم نے ایک دفعہ وہ کہا ہمارے ایک سابق کمشنر نے اس کو ریز کیا اور میں نے ان کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ انہوں نے ریز کیا اور وہ لیٹر مجھے تک پہنچا اور اس نے کہا کہ اس کو جب بریفنگ ہوئی تو اس کو بتایا گیا کہ راوی میں اتنا پانی بہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ فوراً پانی اس کو ڈائیورٹ کرو اور اس کو لے جاؤ جو ڈپریشن ہیں کہیں بھی لے جاؤ پاکستان نہیں جانا چاہیے پانی. لیکن وہ ڈپریشن ساری پنجاب میں ہے اور وہ پنجاب گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا وہ پانی کہ ہم اس کا پانی دیں گے ہم اپنے واٹر لاگنگ نہیں کریں گے تو یہ پانی جو ہے بہ رہا ہے. دوسری مسکنسیپشن جو ہے وہ ہے اس کی جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ریزولوشن ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں چاہتے ہیں. اس کے لیے جو کورٹ ہے وہ بھی ٹریٹی میں گیون نہیں کورٹ بنائی جائے گی اگر ویسا کوئی مسئلہ کریٹ ہوگا تو اس کے لیے کورٹ بنائی جائے گی. جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا وہ پہلی بات کرتا ہے آپ کو کیونکہ ہمارے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہمارے دریاؤں پہ مغربی دریاؤں پہ وہ جو ڈیم بنانے جو ان کو اجازت دی گئی ہے وہ زیادہ اس میں جو اس میں بالکل ڈیفائنڈ کرائٹیریا ہے ڈیزائن کا اس ڈیزائن کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کسی حد تک. لیکن جب ظاہر ہے کہ ہمیں ہم زمین وغیرہ پہلے جس طرح نے کہا کہ ہمارے ہمیں مریض رہتی ہے اور ہم اس کو بڑا کریٹیکلی اس کو ڈیزائن کو ریویو کرتے ہیں تو ہم اس پہ اعتراضات کرتے ہیں. اب اس پر جب اعتراضات کرتے ہیں تو اس میں جو ٹیکنیکل اعتراضات ہیں 23 کوشچن ہیں لیکن ایپ آف دی ٹریٹی میں 23 کوشچنس ہیں. اس 23 کوشچن میں وہ اعتراض ہمارا جو آبجیکشن فالو کرتا ہے تو وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے. نیوٹرل ایکسپرٹ اپائنٹ کرتا ہے ورلڈ بینک اور اگر ہمارا اعتراض 23 کوشچن کے بیانڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے رپورٹ بنائی جاتی ہے. جیسے کشن گنگا کے کیس میں بنائی گئی تو اس کو کشن گنگا کا پانی اوپر کشن گنگا کو اس کو نیلم نیچے کہتے ہیں جس میں ہمارا نیلم جل پروجیکٹ بنایا گیا ہے. وہ اس کا پانی ڈائیورٹ کر کے طرح کے تھرو لے جا کے جہنم میں ڈال رہے تھے
पानी हमें पूरा मिलना था मुजफ्फराबाद से, लेकिन हमें वाया झेलम मिलना था, नीलम के थ्रू नहीं मिलना था, और हमारा जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है वो कंप्रोमाइज होता था, फिर उसकी जो पावर प्रोडक्शन है कम हो जाती। तो वो एक जो डाइवर्जन का जो है वो एक जो क्वेश्चन बनता था वो लीगल क्वेश्चन था, वो उसके लिए कई दफा हिस्ट्री में कोर्ट बनवाई गई। ये शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट किया, लेकिन बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जो गिलानी साहब गिलानी साहब को मैंने ब्रीफ किया, उन्होंने फिर वो सार की मीटिंग में मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कोर्ट बना दी और कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। उसमें ये क्या था कि हमारा प्रोजेक्ट भी डिले हो गया था। अगर हमारा प्रोजेक्ट टाइमली बन जाता तो फिर हमें वो डाइवर्जन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बहुत डिले था, और वो फिर जो है वो कोर्ट ने उसमें जो हमें 9 किलोमीटर तकरीबन 320 टन थे, वो पानी हमें एनवायरमेंटल तो दिया, लेकिन उसको बाकी से डाइवर्जन की उनको इजाजत दे दी। अब जो मसला पैदा हुआ उसके बाद वो था, क्योंकि हमारे एतराज़ात थे और जो नीलम वैली की बड़ी तरह हो गया, ये जो है और नीलम उनके जो किशन डैम पे जो हमारे थे 4 एतराज़ात होते हैं, हमेशा तकरीबन 4 एतराज़ात ये होते हैं। उनकी स्पिलवे की पोजीशनिंग, क्योंकि स्पिलवे की पोजीशनिंग से वो जो है वो पानी के मैनिपुलेशन, अगर वो स्पिलवे ट्रीटी कहती है हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए, ताकि वो कम से कम उस जो डैम के टॉप पे स्पिलवे होगा तो कम से कम मैनिपुलेशन। और वो आप देखें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, जो कस्टमरी डिजाइन प्रैक्टिस है, वो अलाउ कर रही है स्पिलवे की पोजीशनिंग बीच में भी डिजाइन हो जाएगा और नीचे, ताकि उसमें सेटअप जो सिचुएशन है उसको जो प्रेशरिंग की जा सके। वो इसमें कस्टमरी डिजाइन प्रैक्टिस की भी बात करती है, तो वो आप जो डैम बना रहे हैं उसमें वो स्पिलवे बीच में दे रहे हैं, जैसे हमने बागेहाट डैम में दिया। बागेहाट का हमारा जब उनके साथ डिस्प्यूट हुआ तो वो उसमें हमारे ये थे 3-4 टेक्निकल एतराज़ थे, जो लीगल एक्सपर्ट थे उसके लिए लीगल एक्सपर्ट को नहीं लेके गया था उसको, और वो उसमें उसने लीगल एक्सपर्ट लिखा अगर बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के एतराज़ात बिल्कुल बदल जाए, और उन्होंने उसमें इसको जो है इसको डेडलाइन चेंज होना चाहिए। जब उसने विजिट किया डैम का, तो डैम तकरीबन 80-85% बन चुका, यहाँ पे भी डिले का फैक्टर है। तीसरा, उससे किसी एक डैम शुरू किया, उसमें हमारे 4 एतराज़ात थे, वही 4 एतराज़ात टेक्निकल एतराज़ात, उसके लिए हमें लीगल एक्सपर्ट के पास जाना था। यहाँ पे आके कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको भी इसी दिन दोनों के लिए 4 एतराज़ात जो किशन लगा पे थे टेक्निकल, और 4 एतराज़ात जो जनाब पे बना रहे हैं 850 मेगावाट का, इसको हम लेके जाना चाहते हैं कोर्ट में। अब ये ट्रीटी के में नहीं है, ये ट्रीटी के बाहर है। इस पर ट्रीटी ने कहा कि अब आप जो है वो हम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए इसमें मैं बैकग्राउंड मैं इस ट्रीटी से 30 साल से मुंसलिक, इसमें मैं पहले जूनियर पोजीशन में था, लेकिन दबाव कैसा होता था कि जब भी किसी बड़े इशू को हमें ले जाना होता था तो हमारे कमिश्नर जो सीनियर थे वो सर लीव पे होते थे, चले जाते थे कहीं, और वो फिर वो मैंने जितनी रिश्तों तक जो मेजर इशूज रेस की हैं वो मैंने की। तो वो मैंने भी वो जो प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि ये इंडिया का पॉइंट ठीक है, वो ये लीगल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट के लिए बैठना वर्ल्ड बैंक को, उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करता है लीगल एक्सपर्ट को, तो ये सारी मीटिंग कोई वाशिंगटन में होती थी, और वो वर्ल्ड बैंक ने यही कहा कि लीगल एक्सपर्ट अपॉइंट कर देते हैं। और ये वादे में मैं लोग शायद कुछ लोगों को नापसंद होने के लिए कि ये फैक्ट्स हैं, और ये आज से 6 साल पहले मैंने जब लोगों ने कहा कि नहीं हम इसको कोर्ट में ही लेके जाएंगे, तो मैंने कहा ट्रीटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इंडिया को मैं कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने 65 साल ट्रीटी को बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ, जैसा साहब को शायद याद होगा 2002 में बिल्कुल बॉर्डर पे थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं है, अभी ट्रूप्स बॉर्डर पे नहीं है, तो बॉर्डर पे के साथ तमाम कम्युनिकेशन बंद हो चुकी थी, और उन्होंने हमारे आईकमिस्टर को एक्सप्लेन कर दिया था। उसको एक हमारी मिलिट्री मीटिंग होती है लास्ट वीक ऑफ में, यही पीरियड था, और वो मैंने जब उनको लिखा तो हमारे लोगों ने कैसे वो मीटिंग होगी भाई, वो तो सारा उनके साथ तो ये नहीं चल रही थी। मैंने हमारा काम लिखना है, मैंने उनको पॉजिटिव
तक जो है ना उसको 42 ईयर्स हो चुके हैं, आफ्टर 42 ईयर्स में बहुत अच्छी तरह ट्रीटी पर, और ये अगर मीटिंग नहीं होती है दिस इज द ब्रीच ऑफ द ट्रीटी। और उन्होंने वेरी लास्ट डे जब हमें फर्स्ट ऑफ जून से पहले दोनों गवर्नमेंट सबमिट करनी होती है रिपोर्ट एनुअल प्रोग्रेस होती है, उन्होंने रात 31 पे कोई फैसला किया कि यहाँ मीटिंग करते हैं, आप लोग दिल्ली आते हैं। तो मीटिंग हुई और उसके बाद वो टेंशन डिफ्यूज होना शुरू हुई और ट्रूप्स विथड्रॉ होने शुरू हो गए। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है इस ट्रीटी की। Sorry, I'm interrupting, लेकिन just a very small clarification. This clarification relates to the treaty. The treaty also asks for a permanent Indus commission. इसका मतलब है, और treaty में ये लिखा हुआ है, each party would appoint high-ranking engineer competent in the field of hydrology and water use. He is to represent his government in all matters arising out of the treaty, and he is a means of communication between the two governments. This is written down in the community. My question is that the appointment of the commissioner from the Pakistan side and from the Indian side, because he is the person who is going to talk about what is going on in India, क्योंकि उनको regularly visit भी करना है उस site को। ये भी उसकी जिम्मेदारी में है कमिश्नर की कि वो विजिट करे और साइट को देखे कि रिवर्स बाकी हो क्या रहा है। सो ये चीजें क्या पाकिस्तान के बात से क्योंकि आपने वो भी कहा कि इंडिया ने इस ट्रीटी को बहुत अच्छी तरह से संभाला और वो उन्होंने इसको जैसे जो ट्रीटी के अंदर था, और ये बात आप सबकी सही है कि इट्स मोर ऑफ ए टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्रीटी देन ऑफ ए पॉलिटिकल और एनी अदर डिप्लोमैटिक नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। So the question is, how well did Pakistan do on the commissioner's role? It's very important. It's very important for communication between the two countries. Yeah. And that question also goes to you as well. Yeah. So I have a chance to be member of the commission's two meetings which were held in Pakistan. The Indus Commissioner by India and Indus Commissioner by Pakistan, they chaired meeting from both sides. So I used to be part of that meetings, sessions, and I think Pakistan is well prepared. Pakistan is fully conversant about the treaty and to defend the projects and to raise issues on Indian projects. So water team is, I think, well equipped for that. And especially the currently the Commissioner Indus from Pakistan is Malik Ahmad is addressing this all matters very actively, swiftly and doing well. I think we should have a full confidence on our Pakistan Commissioner of Indus Waters. उनकी क्वालिफिकेशन क्या हैं? मेयर अली शाह साहब की, उससे पहले जमात अली शाह साहब थे। Why is it कि only Shahzad I think commissioners? it's not only the commissioners' qualification matters, because on the background, full-fledged support from NASPAR, from WACA and all other engineering organizations and even legal entities are available for the information. So I think it's not a question that we should have full confidence on our investigation. Number one. Number two, I can say that like one of the questions was that how to resolve the anxiety due to this Indus Waters Treaty. So there are some matters which need to be dealt for the treaty to be properly worked. The other thing that there are a lot of things we have to do inside Pakistan. So let's consider those that if India somehow creates some problems for Pakistan, then Pakistan should be able to address those issues and to avoid the stress on our irrigation and agriculture projects. Yes. Number one country to address treaty at international level, no issue. The other is to address at local level. Like
We have a problem on the Chenab River. We have no dam on Chenab River. So we have already planned Changyot Dam on Chenab River, where feasibility is complete. The design will be ready within few months. And if we build this dam on Chenab River, so we can at least address 30 to 40 days stress that India can create. We can provide water from the storage created on Chenab River. And similarly, we have another dam like Indus. We have already started Basha Dam project. We have already working on other projects. So we have need to immediately work on Chenab River to address the stress the India can create on Chenab River for Pakistan. So this is one of the project which can reduce anxiety of the nation. So similarly, there are other projects like our population is increasing. By 2050 it will be around 350 million population. So around whatever we have today, additionally we need around 70 million acre feet additional water. But water is constant, it will not increase. Rather there are apprehensions that it will be reduced. So how we can do that? Whatever the flood water, we have a hydrology in such a way that 80% of 145 million acre feet water is available in 100 days due to monsoon rains and snowmelt due to high temperature. But remaining 265 days, we have around 20% water. So dams are necessity of the nation. In 1960, the World Bank proposed that every 10 years, Pakistan should have additional new dams. So water so far created around storage capacity of 21 million acre feet, which has been reduced to around 14 million acre feet due to sedimentation in our reservoir. So if we are working on Basha Dam project, and it will be ready by 2031, and on completion we will add around 10 million acre feet water in the system through this Mohammed Dam, Basha Dam project, and Dasu is a lot of the river projects. But this Basha Dam project not only help to increase life of the Tabela Dam project, it will increase around 50 years life to Tabela, but also add supplementary power on all the projects because water availability on all these hydropower projects will improve. So around 30% more energy will be generated from this project. So this is the things which need to be done within country so that we can cover up the stresses created by India through their increase of project. But one thing I want to share that on western rivers, India has already provision in treaty that they can go for certain storage and they can also use for localized use. But up till now, India is not able to utilize that provision available in the treaty. But because they are creating or developing run of the river projects, and they always try to increase the storage and to put the low-level tunnel at the lowest level and raise the spillway level. Basically, they just want to add additional capacity to add more water in their storage. But always industry commissioners go for it that they should not have the manipulating capacity. मैं आपकी परमिशन से इनकी बात की तारीफ करना चाहूँ। इंटरनेशनल लॉ में भी एक फ्रेमवर्क है जो ये कहता है कि अपर राइपेरियन को तो हम सारे कहते हैं कि अपर राइपेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ट्रस्टी है फॉर वाटर इट कम्स डाउन टू द लोअर राइपेरियन, मगर लोअर राइपेरियन की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज दैट वाटर जो उसके पास से होकर कहीं और जा रहा है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इंटरनेशनल वाटर लॉ रिक्वायर करता है। ये मैं डिसाइड करूँगा जो डैम बनाने का अमल है पाकिस्तान में इंटरनली टू सेट ऑफ दैट थ्रेट कि अगर वो बनाकर पानी डाइवर्ट करते हैं तो हम वो डैम पाकिस्तान में बनाकर जो मानसून
باقی پاکستانی ایکسپلین کر دیں تو ہم اپنے کسانوں کے لیے اور اپنے لوگوں کی سیکورٹی کے لیے اس کے لیے you have to go to Council of Common Interest, National Economic Council. Political consensus is a must. Because ڈیم کی سجیشن انجینئر دے سکتا ہے, وکیل بھی کہہ سکتا ہے نہیں بن جائے گا لیگلی, لیکن پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز بڑی کرتی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں ہماری چاہے جس صوبے میں جس کی حکومت ہے they have to come together on this. Thank you. یہ جو یہ ویسٹرن ریورز ہیں ان میں سے ہے کہ انڈیا کیناٹ ڈائیورٹ, بٹ جو کبھی کبھی میرے پاس انفارمیشن تھی دیٹ انڈیا از پلاننگ ٹو میک ٹنلز فار چناب اور ریور چناب. از دیٹ بیسیکلی دیکھیے ٹیکنیکلی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں انجینئرنگ وائز, آپ ٹنل بنا کے یو کین ڈائیورٹ, لیکن ان چیزوں کو اگر وہ ٹریٹی کو چھوڑ دیتا ہے پھر عمل نہیں کرتا دین وی ہیو ٹو فورس ہم. وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ ڈائیورٹ کریں گے دین وی آر ایٹ ورک ٹو بہت دیتے. ہم نے ڈیمز کی مینشن کو بھی, آپ جو بات کر رہے تھے نا انٹرنل کنسنسس کی, ڈیمز کی مینشن کو ہم نے ریڈ لائن بنایا ہوا ہے. لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, ہم بھائی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں جب پانی کی بات ہو کہ جی کو ڈیم بننا ہے یا کچھ. یہ از ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح ہم نے اپنے آپ کو کارنر کر لیا اپنے سیاسی کنسیڈریشن کی. میرا بھی یہ ہوگا کہ یہ جو ایک نیا کلیکٹیو تھریٹ فرام دی آؤٹ سائڈ از لوکنگ ایٹ اس ٹو آل آف اس اینڈ وی آر ایکول افیکٹڈ, آل پروونسز, آل فرینچائزز, آل پولیٹیکل پارٹیز آر لائک. So political parties اور ان کے heads they need to convene together consensus. دیکھیں انڈیا نے آج یہ کر دیا ہے, پہلے کچھ عرصے بعد holding in abeyance withdraw کرتے ہیں یا hold کرتے ہیں, holding in abeyance کو abeyance کہہ دیتے ہیں. We need to put our house in order in terms of doing all this political. انڈیا نے ایک سٹیج پہ, آپ کو تو پتہ ہے تو میں سوال پوچھ رہا ہوں, انڈیا نے ایک سٹیج پہ تو یہ بھی پوائنٹ آف ویو اپنایا تھا ورلڈ بینک کے ساتھ کہ یہ لوور رائٹ ایرین جو ہے یہ تو اپنے واٹر کو یوز ہی نہیں کر رہا اور سمندر میں جا رہا ہے, تو اس کو ریوائز کریں اور ہمیں زیادہ استحقاق دیں کیونکہ ہم کشمیریوں کو اریگیشن کے لیے پانی دینا چاہتے ہیں. بیسیکلی میں ایک بات کرنا چاہتا Let ہوں. this be last debate because then I have last question as well. Bhasha Dam project is built under construction due to this consensus. تو بیسیکلی وجہ یہ کہ وہاں سے کوئی کنال نہیں نکل رہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 1985-87 میں جب کالاباغ ڈیم بھی بنا تھا, there is no canal from that. کالاباغ سے بھی کوئی نہیں ہے, اور لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چناب ڈیم میں چنڈور ڈیم اس میں سے بھی کوئی کنال نہیں. تو بیسیکلی یہ جو پانی ہے آلریڈی واٹر میں جو بارڈ ڈیسائڈ ہو چکا ہے انڈین پروونسز, جس میں جو بھی اسٹوریج بنے گی اس کا پانی بھی ہم بانٹ چکے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ یہ کیوں اسٹوری ہے کہ تھل کنال بننی ہے تھل کو سیراب کرنے کے لیے کالاباغ ڈیم سے, یہ کیسے it has found traction and everyone believes it like حدیث and قرآن. سر میں سچی بات بتاتا ہوں کہ جو سچائی ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. چیئرمین بابڑا نے 22 کالمز لکھے ٹو بلڈ آن کالاباغ, تو وہ اس کو ہم نے ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا کہ ہر صوبے میں وہ پرنٹ ہوگا, لیکن سندھ میں سندھی میں بھی پرنٹ نہیں ہوا, بلوچی میں بھی پرنٹ نہیں ہونے دیا گیا اور پشتو میں بھی نہیں ہونے گیا تاکہ لوگوں تک سچ پہنچے ہی نہیں. تو جب تک لوگوں تک سچ نہیں پہنچے گا لوگ اس کے لیے ایگری نہیں ہوں گے. ان تک جھوٹ پہنچ رہا تو وہ جھوٹ کے لیے وہ سر کے بات کر دیتے ہیں. So let's take the last question, and this is if there is one thing that you would like to suggest, is कि हम क्या करें in all this situation. What's the most important thing? And I'm going to just ask each one of you. We have got 1 minute to take on to this thing. What is the one important thing that we Pakistan should do to solve this problem or to overcome this situation? Pakistan is a very difficult situation. With reference to the Indus Waters Treaty, it is advanced and its restoration is now as difficult as it was the initial negotiations of the treaty. So हमें इसको मैं इसको सिंपली वर्ड्स में कहूँ, इसको हमें साथ ही लिंक करना होगा टेररिज्म और जो
जब वॉर की बात करते हैं, उसका ट्रीटी की बात करते हैं, जब हम मिला के करेंगे तो कभी ट्रीटी दोबारा रेस्टोर नहीं होगी. ये मैं हूँ, क्योंकि मैंने 30 साल के साथ नेगोशिएट किया है उनके. तो हमें इसको सेपरेट करके पॉजिटिव मैसेज देने होंगे कि हम इसको जो जैसे अभी किसी रेफरेंस से बात की, उन्हीं ने उस वक्त कहा था जब हम प्रोविंसेस के बाद दरम्यान कोई झगड़ा था पानी का, तो मोदी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उस वक्त उसने कहा था कि ये पानी जाया कर रहे हैं, समंदर में फेंक रहे हैं, और अब हम इसको हमें डैम बना देते हैं, स्टोरेज बना देते हैं, क्योंकि हमें कोई स्टोरेज की इजाजत नहीं, हमें स्टोरेज बना देते हैं, हम दिल्ली बनाएंगे, पाकिस्तान को सर्दियों में पानी मिलेगा. अब ये उस कॉन्सेप्ट को आगे चलाना चाहते हैं. अब आपको अपने आप को जो है ना उस चीज से बचाना है कि वो वहाँ पे स्टोरेज बना सके. अगर ऐसा हो गया तो काफी मुश्किल. हम कहते तो हैं हमारे पास जेनर डैम 30 साल से पड़ा हुआ है, मंगला बराबर 30 साल से पड़ा हुआ है. स्ट्रक्चर्स बनाने इतने आसान नहीं है. इस वाटर के सबसे महंगे स्ट्रक्चर्स होते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग के जो डैम्स बनते हैं या कैनाल्स बनती हैं. तो हमें इस ट्रीटी को दोबारा से रिस्टोर करना है, इसको इसी तरह इसी शेप में. तो थोड़ा बहुत जो हमसे गलतियाँ होंगी, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद साहब के नाम भी ले, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा. कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं, उन्होंने गलत फैसले किए हैं. मैंने 6 साल पहले प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में बता दिया था कि अगर ये गलत फैसले हो गए तो ट्रीटी जहाँ से निकल जाएगी, और फिर हमें जो है ना फिर नई ट्रीटी के साथ. Keep the treaty. I'm okay, fine. You're fine. Right, sir. आप कुछ कहना चाहिए? What one thing Pakistan should do to send on both sides. दो चीजें. पहले पाकिस्तान को जो एस्केलेशन भी है उसको भी लिंक करना चाहिए. अगर इंडिया विड्रॉ कर लेता है होल्डिंग इन abeyance को, I think that is for us that will be a green light, and that is what we should communicate with international community. On the local side and internal side, dissemination of truth है outer water reservoirs and local dams. इसमें नौजवानों को किरदार अदा करना चाहिए. प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं हाईडन के, ये अपनी जो यहाँ की डिजिटल टीम है, जिस तरह ये बात बता रहे हैं कि जो डैम के सही हकायक हैं वो ट्रांसलेट भी होने नहीं दिए गए. तो यहाँ पर पॉडकास्ट बनवाकर इनकी बात, किसी और की बात वो खुद बैठ कर इन्हें एक्सप्लेन करके सिंधी जुबान में, पश्तो में, और आप उसको फॉरन डिसेमिनेट कर सकते हैं. उसका अपना अट्रैक्शन होगा. और मैं समझता हूँ कि आयरलैंड की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगी if you set up some sort of a podcast mechanism to explain the reality to the people of this country. Thank you. Basically, ट्रीटी में ये प्रोसेस इंटैक्ट है, और उसको इंटैक्ट स्मार्ट करने के लिए हमें इंटरनेशनल फोरम्स को बड़ा एग्रेसिवली अप्रोच करना पड़ेगा कि वो हमारी सपोर्ट करें, और उसके लिए बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत है. मेरे ख्याल में ट्रीटी इज इंटैक्ट. ट्रीटी इंटैक्ट है, और हमें इंटरनेशनल फोरम्स को अप्रोच करके उनको मोटिवेट एंड कन्विंस करें कि लेट्स मूव ऑन. और एक मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि वेस्टर्न रिवर पे इंडिया ज्यादा कर नहीं सकता. बेसिकली वो उसकी टोपोग्राफी इस तरह की है कि उसके ऊपर उसके लिए ज्यादा डैम बनाना, बस ये है कि दुश्मनी में आगे टनल अगर उसने बनाए तो दैट विल बी मोर इंजूरियस टू पाकिस्तान. अदरवाइज अगर उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाता है तो वो बड़ी स्टोरेजेस भी नहीं बना सकता और कंज्यूम भी नहीं कर सकता. लेकिन we should need to be vigilant and more active. आप जो बताएंगे कितने साल हो गए इसको बनते हुए, ये क्यों बनाया? सर जी आपका बिल्कुल ठीक है. नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि ये बना है, बना हुआ है, और थोड़ी सी एफर्ट से. सर मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ पुरानी बात. सर जब दबेला बना 74 में, उसके अंदर 300 सिंक होल्स बने, और सर उसी दिन उसको इवैक्यूएट किया गया, खाली किया. ना करते तो इट वुड हैव बीन लॉस्ट. उसकी सर टनल फट गई, उसके स्टिलिंग बेसिन बन गए. और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के वो ये कहते थे कि we have sleepless nights due to this project. लेकिन आज देखें प्रोजेक्ट इज डिलीवरिंग टू द नेशन. लेकिन उसने जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया उसको, तो सारे कंसल्टेंट कंट्रैक्टर और बड़ी के आज पता नहीं क्या होता है. सिंपली वो लैंड किया और उन्होंने कहा जेंटलमैन
आपने अपनी बेस्ट एफर्ट्स की, go and correct it. There was not a single inquiry on that. अब एक इंजीनियर है, उसने अपनी बेस्ट एफर्ट्स की, आप उसके ऊपर आप साल इंक्वायरी में लगा रहे हैं, तो उसकी बजाय आप उसको गो एंड थिंक, स्टार्ट वर्किंग, करेक्टिंग इट, इंक्वायरी चलती रहेगी. आप देखिए 1 साल या 6 महीने से ज्यादा हो गया, हम ये इंक्वायरी के डिसीजन वेट कर रहे हैं, उस पर गो एंड सर. now we have sir, there are many issues. जी, like आप पूरे फंडिंग भी तो नहीं देते ना, फंडिंग इज अ बिग इशू. अब आप देखेंगे जो हमने बादशाह टैक्स शुरू किया है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अराउंड 30% पैसे देते हैं. Remaining all will be generated by water from international donors, from our own equity and local banks. उसके लिए हमने ग्रीन कलर बॉन्ड फ्लोट किया लंदन स्टॉक एक्सचेंज में. इस वक्त वापडा की क्रेडिट रेटिंग इज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और हमने जब उनको 500 मिलियन डॉलर मांगे, तो दे ओवर सब्सक्राइब 6 times. They want to give us $3 billion US. तो बेसिकली ये है कि आप टाइमली उन चीजों को हमें डिसीजंस भी दें और सपोर्ट भी करें. इश्यूज आते हैं और इश्यूज रिजॉल्व भी होते हैं. When was that when we first started? It was around 2008 or Needham Channel was started around 2008 and 9. 2008. Yes. And the inquiry which is going on is related to some design of engineering or some. Sir, basically, sir, last year there was some जो हेडलिस्ट टनल है उसके अंदर कुछ सेटलमेंट्स हुई है, उसकी वजह से उसके अंदर डेब्रिस आके तो वो प्रोजेक्ट को फिर बंद किया गया. तो अब ये वो इश्यूज आए हैं. Is that fault correctable? Could it be? Yes, no issues. So I thank the panelists. वैसे ऑडियंस के लिए क्योंकि इतना ऑफिशियल जो है वो मीटिंग हो रही है, तो बुनियादी तौर पर जो ये वाला जो डेली प्रोजेक्ट है, दिस वाज डिसाइडेड हर्डली टू काउंटर इंडिया, और इसके डिजाइन के अंदर बहुत से फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से 3 दफा सुरंगें बढ़ चुकी हैं और कई दफा उस प्रोजेक्ट्स को आगे कर चुके हैं. तो ज्यादा तो खैर यही ज्यादा जानते हैं, और मैं अगर गाँव आदमी की जो बातें वो कर रहा हूँ तो और मैं 3 दफा मैं भी विजिट कर चुका हूँ और उसकी सुरंगें देख चुका हूँ, और ये था कि बस अब चलने वाला है, लेकिन चला नहीं. सर ये 5 डेज चला गया सर, 5 डेज चला भी है और आपने पैसे भी कोशिश कर चुके हैं. बेसिकली ये है कि उसके अंदर फॉल्ट आएगा, नीड करेक्शन एंड नॉट नथिंग मोर देन दैट. Right, Ji, I think we need to close the session. Dr. Singh, having been in the military for that long, so it is our job to define acts of war, so that we have to take action then. तो हमारे लिए गवर्नमेंट जो है एंड द मिलिट्री टॉप ब्रांच मिलके एक्ट्स ऑफ वॉर को डिफाइन करते हैं. एब्रोगेशन ऑफ द इंडस ट्रीटी इज एन एक्ट ऑफ वॉर अंडर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. और अगर इंडिया ने ऐसा किया तो इसके लिए लड़ाई ना होनी रहे. और यूब खान ने भी इसीलिए ये किया था इंडस बेसिन ट्रीटी, बिकॉज अगर इंडिया इसको कंट्रोल न किया जाता है इंडिया को, तो पाकिस्तान going to a war of survival rather than victory or defeat. Thank you very much. I think it's time to close this session. I thank the panelists. Let me just make a couple of remarks on this thing. I think the closing thing is that we should have more storage, but I would like to add here, in water in the Indus River is not enough. There were 17 creeks in Pakistan the downstream, out of which only 2 are alive. And we all know the creeks are very important for life. So we are destroying our creeks. And by saying that we are wasting water towards the sea, I think we need to correct this idea that we are not really wasting water. Yes, resources, we need resources. We are dependent on international organizations for building our storage capacities. We do not have
enough money in the budget. Most of the budget goes into the deficit, and I think that's the debate that's going on. And thank you very much, the organizers, the panelists, and everyone there. And I would now request the Speaker of the House Assembly to please come and present his address. Thank you very much. नहमदहु मुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब इब्राहिम मुराद साहब, President of this august institution, जनाब General जावेद साहब, जनाब अहमद बिलाल सूफी साहिब, जनाब सुहेल वड़ैच साहब, जनाब साहिबजादा बशीर साहिब, जनाब शाहिद साहब, I apologize, the list given to me, probably the guests have been substituted, but the esteemed Indus Commissioner, who has worked in his capacity for a good time, was sharing his thoughts also. Ladies and gentlemen, members of the faculty, dear students, I am really thankful to Ibrahim sir for organizing such a meaningful dialogue. I spoke to him a week earlier, and as a concerned citizen, I was looking at my educational institutions, that such big happenings, whatever the merits of this treaty, whatever the legal aspect of this treaty, whatever the engineering permissions were given in this treaty, whatever the bilateral arrangement was, leaving that aside. But as I know water is life, and as a public perception I know that that life is being snatched from me by a hostile neighbor. And I'm wondering whether my intelligentsia, my academia, my people, those who matter in forming public opinions, are they vigilant? Are they looking into the details that what arrangement we had and what was committed to us? What our previous generations committed to us? What my children will have from me? Is our people thinking of that? I spoke to a couple of my friends in different institutions, academic institutions, and I requested them, the gentlemen, you need to stand up. You need to bring in the expertise of your educational institutions. And UMT is one of those institutions about which I keep on hearing good things. I keep on hearing good researches, I keep on hearing good arrangements they have made. So I was inclined to call Ibrahim Saab and request him that on your call, I was pleased to see Mr. Sufi's name here, because I, as a student, have been learning international law from him. I was really happy to see General Saab. I was glad to see Chaudhry Suhail Wadaid Saab here, and as a friend from Wabda and ex-Indus Commissioner. So it was a very meaningful, I learned a lot. I, sitting there, was taking notes of every single word which was being said here. The historical aspect which Suhail Saab said is very right. We have that history which Suhail Saab shared with us. Whether it is Hindu or Sindhu, yes, we have been readers of those details and papers. Yes, that's right. It remained for a long time whether this civilization is Sindhu civilization or is it Hindu. A Hindu, nothing to take off that religious aspect of that being a Hindu and a Muslim side. It had a different connotation and different meaning. Now today's India and today's Pakistan, where are we heading? Ladies and gentlemen, we are two nuclear states. We are into the conflict.
These are not very good times when we are interacting. The Treaty of Water has been abrogated. They say that there's a debate whether it is terminated or is being held in abeyance or is just being thrown away by somebody thinking that he is almighty to do it. He can create a hegemony in this region. He can claim his superiority. He can talk unilaterally of what he wants and neighbors have to listen to that. This is what we are witnessing. We are living in the history today. It's a living history. It's not just what we had in past. It's not what just we will see in the future. This is what we are experiencing today at this moment. My sovereignty has been breached. They have hit with missiles into the heartland of my country, in 3 districts of Punjab, crossing the line of control, crossing international borders. We have civilian casualties, 35 dead people on our hands. Ladies and gentlemen, women and children, they've hit the mosques. We are witnessing it. We have had a day of drones yesterday. Those Kazakis, as was reported by Dawn today, those were known they will fall down, but they just sent in number in tens. They were just over my airspace, breaching my international border, international space. They did it. It has happened. Do we need to rise to the occasion as a nation? Yes, we do. Is it our choice now not to be part of the conflict? Ladies and gentlemen, not anymore. We are into the conflict. Do we have a professional armed force? Yes, we have. Do we have a national resolve? Yes, we have. Will we fight for what we own, what is due for us? We will. But as a matter of fact, what has just been discussed here, as a responsible nation, I must need to appreciate my leadership, national leadership, may it be political, may it be military. They've shown the restraint. This art of war is not just jumping into the fire. It has to be fought with a lot of calculations. If somebody is threatening me with that war, they are mistaken. Now, as a water treaty, I can endorse what Amir Bilal Sufi Sahib said. As a student of law, I know that treaties, as bilateral treaties, we are signatories of some international conventions also on treaties. And Vienna Convention, yes. We actually are regulated by certain conventions, international laws. One party cannot just get away by saying that I do not owe a responsibility to those international obligations. It could not be put into abeyance. We have diplomatic forums. Aggression is part on the India. Whether this treaty took away 3 rivers and gave me 3 rivers is no more point of discussion, because I live on the river bed which has no water. I live on the Sutluj civilization. I've heard the story of my ancestors. I've been living there since more than 1,000 years. I know the details. I know what water means. I know that life is water. I'm living on a dried river. So I actually know what Sutluj is, what river life is. Civilizations were built upon these rivers. Inhabitations were built near the water reservoirs, because water is life. So these 3 rivers, whether the western ones had 80% of the water that Indus Commissioner has just told us is a good arrangement which Pakistani side had made them.
To me, it was information. It was not known to me that how many million acre feet were given to me in that Indus Treaty in 1960, and how many million acre feet water was stopped into those eastern rivers. It was my naivety. And thank you, Ibrahim Saab, you arranged this dialogue, and I, as a responsible person who must be knowing it, got to know this detail just now. Thank you very much. So this is the importance of this dialogue. This is the importance of this resolution which you will pass today. As Amir Bilal Sufi Saab has rightly said, that Ibrahim Saab, if this dialogue is over today, and as Shahid Saab just made us cognizant of a fact, that they sent some papers to be printed in different languages. Those were not printed due to some political reasons. So you can have a podcast, you have a team of media influencers with you, you have a team of social media interns with you, you have a whole campus of 25,000 people. The message could be disseminated so loud that what is right and what is wrong. As a matter of fact, the problem which we had by not building dams and not having political consensus, first let me remind you of a fact that we here in Pakistan are having our own fears, and I respect the fear of dissent. I just don't want to say what I have to say as Punjab, because my history teaches me that I have been blamed in last 70 years for creating a hegemony in the country. Yes, I have been blamed. Did I or did I do I had to or didn't I? And was this the case? History is the best judge. But I have to be conscious of the fact that I cannot just live with this blame. Either I spell it out, or I respect the fear which a smaller province has. May it be a lower riparian, in my case as Punjab being the upper riparian, or may it be there a political position in which they say that our water could be stored and channelized, as the engineer Saab from Wabda just explained, that if there is an ill will, storing water will not help, but making a tunnel and diverting it could be their malice. Yes, that is the case. It is there. This fear and anxiety, as Bilal Saab put it right, that's a low riparian anxiety, and it is well defined in law. Now, ladies and gentlemen, for me to understand whether Indus Waters Treaty allows anybody to construct dams, I do take a moment to understand what Amir Bilal Sufi said. There's one thing, that is that treaty, and there are other